वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज डे वही है बट आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है। इम्पोर्टेंट क्या, वेरी सैड एंड ट्रेजिक। अफरोज इज हेयर, मामा इज हेयर एंड टू ऑफ किड्स आर इन दिस कार। और बाकी जो है, हाय, कैन यू से बोथ ऑफ यू से हाय? बाकी जो है, थैंक यू फॉर वॉचिंग योर कजन। सो आधी फैमिली जो है वो दूसरी कार में है। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज दे दूं। 2 साल पहले यहाँ लंदन इज़ द फर्स्ट प्लेस जहाँ पे मेरे बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया था। आई हैव वेरी आयमा और अफान, कैन यू कीप क्वाइट फॉर 5 मिनट्स सो आई कैन टेल देम। पीछे वो देखे फार्म में आपको जानवर भी नज़र आ रहे होंगे, वो भैंसें बकरियां जो भी हैं। सो मैंने कहा मैं आप लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं। आज का हमारा जो है व्लॉग इतना वो नहीं होगा बट ये इम्पॉर्टेंट व्लॉग है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसकी। 2 साल पहले लंदन में एक मुस्लिम फैमिली के साथ बहुत ही बुरा इंसिडेंट हुआ था। इवन आप लोग सर्च करें लंदन फैमिली सर्च करके हैशटैग करके कहीं पे भी तो आप लोगों को पता चल जाएगा डिटेल कि यहाँ पे इस्लामोफोबिया और एक रिलीजन के खिलाफ कैसे। अदरवाइज कनाडा इज़ अ वेरी सेफ प्लेस फॉर एवरी रिलीजन, हर किस्म के लोग, और बहुत ज़्यादा हम अप्रिशिएट करते हैं। आयमा, कैन यू कीप काइट फॉर 1 सेकेंड? मैं थोड़ी सी सीरियस बात कर रही हूँ बट लंदन का हमेशा बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा है, बड़े अच्छे लोग हैं बट जो हुआ था वो बहुत ही बुरा हुआ था। तो उसी आज के दिन हुआ था, आज के दिन हुआ था ना, तो आज उसकी सेकेंड हादसे की। और यहाँ पे हर साल उस दुख की वजह से और ये वॉक रखी जाती है ताकि इन चीज़ों को कभी भी किसी के ख़िलाफ़, किसी रिलीजन, रेस, किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप, माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ ऐसी चीज़ों को आपको हर साल बताना चाहिए कि खुदा न खास्ता आगे कभी इस जैसी चीज़ हो। सो हम उसी की वॉक पे जा रहे हैं। पूरी हमारी फैमिली जा रही है, आधी फैमिली दूसरी गाड़ी में है। तो चल के वहाँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और डिटेल्स भी बताऊँ। तुम्हें नाम याद है अफरोज? जिनकी फैमिली अफजाल फैमिली मदिहा थी, सलमान भाई थे, उसकी फादर थे, उसकी फादर नहीं थे, उनकी मदर थी और की मदर थी ना। और इनके 2 बच्चे थे। एक बेटा जो है छोटी की तो सर्वाइव्ड और हमारी दुआएं उनके बेटे के साथ हैं। तो हम उसी के साथ जा रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ चले। ये अभी स्पीच चल रही है, उसके बाद वॉक होगी। सो वी आर ऑलमोस्ट देयर। Into this world, and that was the most beautiful feeling because that was the first time that I became an aunt, and I cannot express how joyous that moment was. But all we have learned that through our faith that has given us hope that this is not the end. We'll meet again. We are waiting to be gathered together in Jannah, paradise, to live happily as one big family again, inshallah. And once again, thank you so much, everyone. Thank you, and keep trying to reach out to each other, to your neighbors, to your friends, and
live a happy life. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Thank you, Arjuman, or Apajan, as a sibling scholar. We have all heard how my sister Madiha Salman and her family were brilliant. They were well educated. They were productive members of the community. They touched countless lives, and how Apajan was explaining, I would like to tell as well for us how they have left a void that can't ever be filled. Madiha was 7 years older than me. She was kind, she was gentle, she was a tender, loving soul, and she was brilliant. She was creative, she was imaginative, she was tech savvy. She loved reading, and you could ask her for guidance on any topic on your mind. When we were young and us younger siblings ever misbehaved or needed to be scolded, she would find it hard to be strict and instead would end up in a fit of laughter. I remember her caring nature when I first started going to school, and Madiha would be the loving support I would reach out to help navigate the difficulties for what at that time for me was a daunting transition. I would remember how during summer holidays, she and Apajan would help me improve my handwriting. I also remember that once someone asked me who my favorite sibling was, and I said Madiha's name. Sorry, Apajan, but you were not far behind. And I guess I was blessed, we all were blessed to have amazing parents who raised us knowing so much love. I also remember how she loved math, so did I, and how we missed her at to their home for the first time after the attack. The feeling of joy was replaced by unimaginable grief. Growing up, I was good at sports and I was a sprinter, but I could not imagine how hard that one step would be to cross their home's threshold, which was now empty. I also never thought how heavy the weight of those sad emotions would be, that my knees would give in. In those moments, all seemed lost and life seemed hopeless. For this day, whenever I hear a happy news, I reach my phone to share with her, to see if she made a comment on the family group when I post a picture of my son, only to realize that she is no longer there and she would never reply to my messages. We are not people of despair, so we build communities of care to let them know we are still here and we are not going anywhere. Now we'll be playing a short video that was done by YCCI, and then after that we'll have Maryam El-Sabawi recite a poem. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Get highly educated and find a job and buy a house. In the meantime, holding on to a marriage, raising a couple of kids.
And then one day saying, I want to go for a walk, and everyone gets dressed. It's a nice, shiny, sunny Sunday afternoon. You go stand at the traffic light to cross the street. And that's the end of it. If only we could press rewind. This is what I do each night. Rewind the memories, rewind the sound of your laughter, rewind the conversations that so deeply connected me to you. Mold! Down the street! How many more families will be killed? I even rewind June 6, 2021. That's when I wish I could have pressed pause. But I can't. The YCCI was created by the young people that you've seen at the forefront of this work. At 15 and 16, they should be out with their friends, getting their driver's licenses, worrying about summer jobs and what comes after high school. Instead, they're spending their free time organizing, fighting to keep the memory of their friend alive. What happens to the social contract we honor when this country's sidewalks have become war zones? The world placed a responsibility on our shoulders that would have crushed a mountain. But we will carry it, because others haven't. We will carry it so that no one else has to experience the pain that we have. We will carry it because if we don't, it seems as though no one else will. Our promise to you is that we will dry our eyes and raise our voices until everyone hears us. Hate has no place in civilized society, they told us in school. The promise of civility has been broken. It is our turn to carry on their legacy, to tell the oncoming generations about our London family, and to ensure that people remember them and the reason they could not stand with us today. So the grief is there, but let the light of love, that love that they had for goodness, for spreading good within the community, let that love shine through the grief. Because the grief will remain. The rains will continue to fall. And so will our tears. But let that love shine through the grief. And that is how we will remember our London family. तो भाई वी आर गोइंग बैक. आज वॉक नहीं है, बट आज यही स्पीचेस है. सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है. बच्चे ना तो बस अभी हम वी आर गोइंग बैक. ये आए हुए हैं अब हम टिम हॉर्टन पे. यहाँ पे कॉफ़ी, जब बड़ी फैमिली होती है ना, ऑर्डर्स भी ऐसे होते हैं. आ जाए भाई, इधर बैठ जाए. अब हम इधर आए हुए हैं, अब हम इधर खाएंगे. हमने ले लिया. ये बेचारी का गीला अब ख़राब कर दे. मेहंदी के साथ खड़ी होती है ना. इसके साथ आपकी बन भी बहुत अच्छी रही है ना. आप दोनों की बन भी बहुत अच्छी. तो ये ले, हमारा फैमिली गैदरिंग हो रही है. यहाँ पे बैठे हुए हम सारे. अभी डोनट्स खुला है और बच्चे शुरू हो गए और ख़त्म खाते हैं ये, क्योंकि अभी हम बस कॉफ़ी पी के फिर घर चलेंगे. बाबा नहीं है. अम्मा आप भी कर दे. हाय 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 हाय. नींद नहीं आए, चैन नहीं आए, दिल में तू समाया, प्यार भरा मौसम दियो. अच्छा मैं आपको बताऊं, अफरोज जो पहले ना इस नेबरहुड में रहती थी, और ये नेबरहुड मुझे इतना अच्छा लगता था. इसमें ना सारी चीज़ें सामने हैं. टिम हॉर्टन यहाँ पर है, डोमिनोज है, मैकडोनल्ड है, वॉलमार्ट आगे रोड क्रॉस करे उस तरफ वॉलमार्ट है. मैं एक नया डोनट है आप लोगों के सामने ट्राई करते हैं, कोकोनट वाला. अगर आपने नहीं ट्राई किया तो यू शुड
ट्राई इट। ये देख, दिख रही है ये वाला क्या हुआ आयमा? ये कोकोनट कोटेड है, अंदर चॉकलेट है और ये लो टिश्यू नीचे गिरेगा, मुझे पता है, अभी सफाई करते गए देखो ये करने मुझे नहीं करनी। अम्मा को काम करने वालों की टेंशन ज़्यादा है। दो तो लो ना, खाना दिस इज टू गुड। भाई बहन जो है ना वो एक्सटेंडेड फैमिली में आते हैं। चले फिर अभी हम घर जाएंगे, अपना ख्याल रखें। इसी के साथ आज का ब्लॉग करेंगे ख़त्म। मक्खियाँ घूम रही हैं हमारे खाने पे। चलें।